A very good morning, my dear students. I'm Rama Mishra and I will be taking your online English classes. So, welcome, my dear students. So, the students, before we start, I just wanted to share with you. So, my dear students, I hope you all are doing well and are in great health. I'm already so proud of each one of you for being so patient during these hard times. But remember, everything is possible when everyone is fighting for something together. And how our class fight this together? By remembering to wash our hands regularly, by eating proper food, by reading and playing, and by sleeping on time. Do you know what else you have to do? Remember to smile. Remember to tell yourself that you are very strong, smart, and capable for anything. Despite of these, I want that during this crucial time we can draw, we can write imaginary stories, we can sing, we can dance, and we can listen to good music. Students, I just want to tell you that we all miss you a lot. The classrooms, corridors, school field, everything is so dull without you. We just hope and pray that the situation comes under control and we all can meet each other soon. With this, let's start our class. So, in previous classes, we learned about chapter 1, 2, and 3. Reading of chapter 4 is already done. I hope you already read all the lessons and have completed the exercises. So, now today we will start with punctuation marks. So, let me start with the definition of punctuation mark. What are punctuation marks? A punctuation mark is a mark which is used in writing to separate sentences and to clarify their meaning. Punctuation is क्या है punctuation? Punctuation are the marks. वे marks होते हैं बेटा जो use किए जाते हैं when you write the sentences. Okay? अगर एक फ्लो में आप पढ़ते जाओ और एक ही फ्लो में आप मतलब बिना रुके बिना वर्ड्स पे स्ट्रेस दिए ऐसे आप पढ़ते जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. पंक्चुएशन मार्क क्यों यूजफुल है हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द डेफिनेशन. अ पंक्चुएशन मार्क इज अ मार्क which is used in writing to separate sentences and to clarify their meaning. Okay? Now, so we have different types of punctuation marks. Okay? Punctuation marks कई तरह के होते हैं बेटा. Okay? So, here, can you identify these punctuation marks? Just tell me, can you identify these punctuation marks? If yes, then quickly tell that your parents. Because हम आपके पास है नहीं तो आपको पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा ना कि हाँ पापा मम्मी देखो मुझे पता है कि ये पंक्चुएशन मार्क है और ये कहलाता है. ओके, सो हियर वी हैव द फर्स्ट वन.
The first one is question mark. The second is full stop. The third one is comma. And the fourth and the last one is the capital letter. Okay. Now, just come to the first. It is the capital letters. Firstly, we are going to discuss about the capital letters. The usage, क्या यूज है इसका, ठीक है, यूसेज ऑफ कैपिटल लेटर्स, importance of capital letters and so on. Okay, now here you can see a sentence will always begin with a capital letter. For example, she is going to the market. Here the first letter she का जो फर्स्ट लेटर है S, it is in capital letter. Why it is so? Because it is the beginning of the sentence. जो सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हमेशा किससे होती है? कैपिटल लेटर से होती है. तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा it will be always written in capital letter. Okay, now come to the second point. The second point is all the special names will also begin with a capital letter. For example, Amrita is going to Jaipur with Shaina. So now here we have three special names, that is Amrita, Jaipur and Shaina. Amrita and Shaina are the names of people and Jaipur is the name of a place. So it is in capital letter. Special name, I think आपको पता है बेटा, फ्रूट स्पेशल नेम नहीं है क्योंकि फ्रूट में बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है. पर्सन हम बोल रहे हैं तो पर्सन स्पेशल नेम नहीं है, बिकॉज पर्सन में आपके बहुत से लोग आ जाएंगे, गर्ल्स बॉयज़. हमने शाइना बोला, दैट मीन्स हमने गर्ल की तो बात की है. शाइना इज़ अ गर्ल, वो गर्ल है, लेकिन हम गर्ल की बात करें, लेकिन किस गर्ल की? जिसका नाम शाइना है. हम अमृता बोल रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उस गर्ल की जिसका नाम अमृता है. ओके, हम प्लेस की बात की तो हमने जयपुर बोला, तो जयपुर हम बोल रहे हैं तो ये प्लेस है, जयपुर इज़ द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस, तो हमने जयपुर बोला, ठीक है, क्योंकि बहुत से प्लेसेस हैं, बनारस है, कानपुर है, लुधियाना है, पंजाब है, तो ये सब क्या है? स्पेशल नेम्स हैं. तो व्हेन वी राइट द स्पेशल नेम, ठीक है, तो पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. The pronoun I is always written in capital letter wherever it appears. For example, Sheena and I are sisters. ठीक है, तो यहाँ आप देखो I, pronoun I क्या होता है? pronoun होता है. I hope you know and you must learned in previous class. Pronoun, when we use I, we, they, ठीक, these are the pronouns. जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं वर्ड, वो प्रोनाउन कहे जाते हैं. तो सारे प्रोनाउन नहीं, लेकिन आई, जहाँ आई प्रोनाउन अकेला आई हो, मीन्स आई के साथ इन नहीं होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए, आई के साथ टी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आई अगर लिखा है, ओनली आई, तो वो कहीं भी हो सेंटेंस में, चाहे वो बिगिनिंग हो, चाहे मिडिल ऑफ द सेंटेंस हो, चाहे लास्ट हो, कहीं भी वो हो, आपका वो हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल लेटर रहेगा. नाउ here I is in between the sentence but it doesn't matter. मैंने बोला क्यों? I has to be always in capital letter, हमेशा ये कैपिटल में रहेगा. Now that gets a capital letter. Names of people and pets, names of places, names of holidays, days of the week, month of the week,
sorry, month of the year, not week, month of the year, and beginning of a sentence. Okay, what gets a capital letter? Just you can see on your screen. Names of people, names of pets, special names, holidays. Okay, just you can see this now. Is it clear, students? I hope these points are clear to you all. Wait for the next video for more types of punctuation. Till then, goodbye and have a blissful day.